Dear all, welcome to the LeetCode 100 problem same tree. So what it tells that given the two roots of binary tree p and q, write a function to check if they are same or not. So इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि अगर दो ट्री सेम है या नहीं वो हमें चेक करके रिटर्न करना है बूलियन रिजल्ट दैट इज ट्रू और फॉल्स. लुक दिस वन 1 2 3. सो दिस इज 1 2 3. अगर ऐसे ही दोनों का सेम हुआ then we'll be returning true, else we'll be returning false. So let's understand it in details. Okay, so this is the tree 1 2 एंड हमें चेक करना है अगर ये दोनों सेम है या नहीं दिस वन. सो हाउ कैन वी चेक? जस्ट नोटिस फर्स्ट कंडीशन इज ऑलवेज द बेस्ट केस. मतलब हम चेक करेंगे अगर दोनों में एलिमेंट्स है या नहीं, क्योंकि कोई भी ट्री है या नहीं फर्स्ट हमें लीड कोड में वो सेम चीज चेक करना पड़ता है, द फर्स्ट केस और द बेस्ट केस. सो केस वन दैट विल बी चेकिंग अगर बाकी में अगर एलिमेंट से भी या नहीं, दैट मीन्स if the root is null or not. So first check करेंगे if both roots are null. If both roots are null, that means if both roots are null, like means if the scenario is like this, null and null, we have our nodes, let's say p and the another nodes q, and they don't have a value, मतलब कोई value नहीं है, they are just in existence like this, so they are same in purpose. So this is if both roots are null, then we will be calling them same. So we will be checking this like this condition. For that we can apply that if p equals to null and then q equals to null. So जब भी we will be observing like this कि उनमें कोई value नहीं है, then we will be noticing like this, that is if p equals to null and q that is equals to null. अगर दोनों का वैल्यू नल हुआ, देन सिंपली व्हाट वी विल बी डूइंग, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे रिटर्न नल, रिटर्न ट्रू, क्योंकि इस सेशन में वो दोनों सेम है, दे लुक लाइक द सेम. नेक्स्ट सेशन हो सकते हैं वी गॉट अ केस लाइक दिस, वी गॉट अ ट्री, एक साइड में एक ट्री है अच्छा खासा सा एंड दिस विल नॉट बी नल, और एक साइड में दूसरा जो क्यू है दिस इज नल. सो दैट मीन्स पी नल क्यू नल है, क्यू इज इक्वल्स टू नल. क्यू में कोई वैल्यू एलोकेटेड नहीं है बट पी में वैल्यू एलोकेटेड है 1 2 3. सो दिस इज द केस जहाँ पे वो दोनों सेम नहीं है. दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस, इफ पी इक्वल्स टू नल or so we'll be writing the case like this, if p not equals to null or q not equals to null. अगर इन दोनों में कोई भी अगर नॉट इक्वल्स टू नल है, दैट इज q नॉट इक्वल्स टू नल. सो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. मतलब फर्स्ट दिस कंडीशन विल बी रनिंग केस 1 and then second this condition will be running case 2. So we'll be simply returning return false. So that one. नाउ हम चेक करेंगे थर्ड केस इज दैट इज दोनों में जो वैल्यूज है वो दोनों वैल्यू सेम है या नहीं, दैट मीन्स इफ द वैल्यूज आर सेम और नॉट. सो हम चेक करेंगे, हम यहाँ पर चेक करेंगे अगर दोनों नल है और नॉट. सो ई पी इक्वल्स टू नल एंड क्यू इक्वल्स टू नल. सो हम यहाँ पे इक्वलिटी चेक करेंगे, अगर दोनों में से कोई एक भी मतलब कोई एक भी अगर नल है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. एंड नाउ द केस 3 विल बी चेकिंग द वैल्यूज ऑफ बोथ द ट्रीज. सो हम चेक करेंगे अगर दोनों में से, नाउ सपोज दिस इज द केस, वी हैव द ट्री 1 2 3. So we'll be checking all the elements one by one, 1 then we'll be checking 2 2, then we'll be checking 3 3. So we'll be checking all the elements one by one, one by one. So for that we'll be writing like this, if p dot val अगर कि p की val q dot val की equal नहीं है, if they are not, so simply we'll be returning return false. So that will be the return case. सो दिस इज हाउ. उसके बाद हमें सिर्फ एक ट्री का नहीं, अगर दिस ट्री इज़ वेरी बिग, दिस वन, सो ये काफ़ी बड़ा ट्री है. सो हर सेशन में हमें इस सेम चीज़ को रन करना पड़ेगा, फॉर दिस वन फॉर दैट वन एट लार्ज स्केल. मतलब वी नीड टू अप्लाई समथिंग दैट अप्लाइज ऑन ऑल. सो विल बी सिंपली अप्लाइंग द रिकर्जन. सो विल बी राइटिंग लाइक दिस, रिटर्न ईच सेम ट्री. हम रिटर्न कर देंगे इज सेम ट्री. सो हम लेफ्ट ट्री के लिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. सो p डॉट लेफ्ट कॉमा q डॉट लेफ्ट, और हम पास करेंगे p डॉट राइट
एंड दिस विल बी एंड मतलब जो भी रिजल्ट आएगा दोनों में से ट्रू एंड फॉल्स, उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी रिटर्निंग p डॉट राइट comma q dot write, and that is the program. If we just write this program it will work. And how we can create the node? Simply अगर हमें nodes create करना, we'll be writing like this: tree node p that is equals to new tree node, and we'll be passing the value with what we want to create 1. उसके बाद जब हमें इसकी लेफ्ट साइड में क्रिएट करना पड़ेगा, we'll be writing like this: p dot left equals to new tree node. सो जो भी लेफ्ट होगा 2 पास कर दिया. अगर हमें राइट में पास करना हो, सो p डॉट राइट, सो इट विल लुक लाइक दिस: p and that is 1, left में that is 2, and p dot right that is equals to new tree node and that is 3. so right में हम 3 को allocate कर देंगे. so this is where how the trees will get constructed. so let's observe in the code. okay, so let's start implementing this one. So okay, public boolean tree, I have already made the declaration, so now we'll be starting checking. so हम फर्स्ट केस को चेक करेंगे here. that means the first case कि अगर दोनों ट्री if they are null, मतलब अगर p null हुआ या फिर q null हुआ, कोई भी एक ट्री अगर बेस केस में null हो जाते, so we'll be simply returning true. so if p equals to null and q is equals to also null, मतलब p and q दोनों ट्री null है, so they are same, so we'll be returning true. now the second case, if p equals to null, है और q that is equals to null, मतलब p null है या फिर q null है, क्योंकि अगर both के satisfied होता it would execute. so कोई एक null है लेकिन एक null नहीं है, that means we'll be returning false. return false. now the next case, if p dot val, मतलब p का जो भी वैल्यू हो q की वैल्यू की इक्वल नहीं है, q dot val दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, सो इन दैट केस विल बी आल्सो रिटर्निंग फॉल्स, क्योंकि हमें चेक करना है अगर वो दोनों सेम ट्री है या नहीं. सो हमें रिकर्सिवली सबके लिए चेक करना है. रिकर्सिवली वी हैव टू चेक फॉर ऑल, सबके लिए वन बाय वन चेक करना है. सो फॉर दैट विल बी सिंपली रिटर्निंग रिटर्न each same tree and we'll be passing the p dot left comma q dot left and each same tree p dot right q dot right. so that is, if we just run the code it should work. so let's run the program and it got compiled. let's submit it. so okay, it got submitted. we'll be meeting in the next video session. till then stay connected.